Hi everyone. We just wanted to showcase two amazing souls, and we just wanted to talk. And thank you for being here. And just to do a scroll of these pictures. And Shalini is here with me. We'll just talk. हेलो एवरीवन। सोचा नहीं था एक ऐसे ओकेजन पर दोबारा लाइव आऊंगी, लेकिन हाँ, कल का दिन और आज का दिन शायद बहुत सारी यादें दोबारा लेकर आया है। वही सुशांत वाली यादें, फिर वही इमोशंस, फिर वही फीलिंग्स दोबारा एक्सपीरियंस करी हैं, और दिल बहुत भारी है, इसलिए सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लें। बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे सुनने को मिलेगा। मैं अपनी मीटिंग्स में थी, ऑफिस का काम कर रही थी, और सडनली एक मैसेज फ्लैश किया। पहले तो मुझे लगा कि ये वो है ही नहीं, ये किसी और के बारे में शायद बात कर रहे हैं। वो रजिस्टर ही नहीं किया, वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे जब सब तरफ से वही न्यूज़ आने लगी, तो तब भी ये उम्मीद थी कि शायद कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदल जाए, और ये वाली न्यूज़ चेंज हो जाए। दोबारा से वो सुनने की हिम्मत नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली इट केम ट्रू। और कल से जो मैं फील कर रही हूँ, वो वर्ड्स में कहना मुश्किल है। मेरे घर में सबको पता चल रहा है कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, किस दौर से गुजर रही हूँ, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे फैंस, बहुत सारे लोग आज वही फील कर रहे हैं। बहुत कुछ याद आ गया दोबारा से। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। दोनों टॉल, यंग, हैंडसम लड़के, दोनों सिंगल, दोनों एस, सुशांत सिंह, सिद्धार्थ शुक्ला, दोनों अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड। बहुत सारे सवाल, सेम कूपर हॉस्पिटल। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ कुछ फिशी है, लेकिन दोनों डेथ्स बहुत ट्रैजिक हैं। बिल्कुल नम कर दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे प्रोसेस करें इस चीज़ को। शायद बहुत टाइम लगेगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की भी वही फीलिंग्स होंगी। उस माँ के लिए क्या बोलूँ मैं, जब उस माँ के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कहाँ से इतनी हिम्मत लाई वो, कि जिस बच्चे को उन्होंने गोद में खिलाया, जिस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आई, आज उसी बच्चे को उन्होंने अपने हाथों से विदा किया। उसकी चिता को आग लगाई। वो कैसे सोएंगी आज, वो अपने बाकी के दिन कैसे काटेंगी, पता नहीं। शहनाज के बारे में सब बात कर रहे हैं कि शहनाज का क्या हाल है। शहनाज तो अभी शायद 2 साल पहले उसकी जिंदगी में आई थी, लेकिन वो माँ जिसने उसे कोख में पाला, 9 महीने पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, एक विनर बनाया, उसको हमेशा के लिए खो दिया। एक एक बच्चे का खोने से बड़ा दुख और दर्द किसी किसी भी पेरेंट के लिए नहीं हो सकता, किसी भी इंसान के लिए नहीं हो सकता। और अब उस दुख के साथ उन्हें जिंदगी भर जब तक वो हैं जीना पड़ेगा।
I don't think anything can be more tragic than this. So, just wanted to share my grief with all of you because I know many of you would be feeling it. और कल से सुशांत इतना ज़्यादा याद आ रहा है, फिर वही चीज़ें, फिर वही बातें, वही इमोशंस जो उस समय फील हुए थे वो दोबारा से आने लगे हैं. आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहिए, प्लीज़ बात रखिए, अपनी बात कीजिए आके. कहते हैं बांटने, दुख बांटने से कम हो जाता है. मुझे नहीं पता कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कुछ एक दूसरे से कह सकेंगे, फीलिंग शेयर करेंगे, तो शायद दुख थोड़ा सा, पता नहीं, मैं कम तो नहीं बोलूँगी, कम तो हुआ नहीं कल से. जितनी बार उसकी फोटो देखती हूँ, जितनी बार वीडियोस देख रही हूँ उसकी अर्थी की, उसकी आखिरी जर्नी की, आई हैव ब्रोकन डाउन लाइक मिलियन टाइम्स ऑलरेडी. कभी कभी लगता है कि वाई इज गॉड सो अनफेयर. ऐसा क्यों होता है कि जो इतने इतने प्रॉमिसिंग, पॉजिटिव, हैंडसम, यंग लड़के जिनके अभी लाइफ आगे बची थी, उनको भगवान अपने पास बुला लेता है. और वो बुढ़े, सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, बट वो कनिंग इविल लोग आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं, जी रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. पता नहीं, मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने का क्या डिजाइन है और वो क्या सोचते हैं, पर ये जो भी हुआ है, दिस इज वेरी वेरी ट्रैजिक. 2020 से शुरू हुआ ये. पहले हमने एक सुशांत को खोया और इस साल सिद्धार्थ को. Over to you, Rachna. Thank you, yeah. I mean, you're just saying whatever we are all feeling, and I agree. यहाँ पे जूडी है who's saying that, it's just even reading it, I'm not able to process it properly. Just saying that you're not supposed to be carrying your child's coffin, right? Like, it's not even fair. So it's just Praveen ji hai yahan pe. I'll just take him. Praveen ji, thank you for being here, sir. Oh, he got disconnected. Okay. And here, Night Owl says, it happened at the peak of their careers, right? Like, can't imagine what they would have been doing if they were still here. And I believe he did not have a father. The Sundar Shetty ji bol rahi hai, because he lost his father early on, he became very close to his mother, and there's so many pictures on the internet with his mother, and it's just like, as a mom, that's the only thing, right? How can I protect my child? How can I protect my child? Like, that is the constant source of anxiety, right? Like, my child just started driving, so it's just like literally on the forefront of my brain. So it's just, I don't know. Anybody It's please true. wants to जैसे join? होता है ना, Yeah. अगर बच्चा भागता है और गिर जाता है, तभी माँ का दिल एकदम से बाहर आ जाता है कि अरे मेरे बच्चे को चोट लग गई. और यहाँ तो बच्चा ही नहीं रहा. If anybody wants to join the stream, please join and share your thoughts. We don't want it to be a sad session, but Yeah. there's lots to express. बहुत कुछ कहने के लिए, तो please आप join कीजिए. Yeah, we just want this to be like celebrating their legacy and celebrating what made them so special and why we are all hurting. But what is it that is so amazing that we have to take away from their lives? That is the whole point of this session. Because even
in our grief, we have the resilience to find meaning in continuing to live. How can we find that meaning? Only when we figure out what is so amazing about all these people around us that make life so beautiful. Some of those pictures are like, I'm just like, how are these two kids so alike? It's just so, just amazing. Judy, please join the stream. We were thinking, we were debating, Shalini and I, if we were going to have the courage and the strength to do this show. But we were like, we have to do something about our grief. It's not fair that all these people are going and we're all grieving, and we are doing so much in terms of action. Our three campaigns that we are running: boycott Bollywood, boycott celebrity endorsements, and of course justice for Sushant Singh Rajput. All these things that we are doing, of course we are converting our grief into action. We are not just grieving, or we are not just being passive about what we are feeling. We are obviously propelling all our grief into action. But yeah, absolutely, Ashnur. Ashnuji, yeah, so many similarities in the way that they had lived their lives. Um, yeah, be just overwhelming. Mugliji, thank you. Sorry, Manisha, please, you're welcome to come and speak, sweetie. Thank you for everything that you do on Twitter. You're helping so much with ground protesters, coordinating, tweeting, just so many important tweets. Some people tweet uh, just inconsequential tweets, but some people like you who tweet because they mean business, and I really appreciate you. Thank you so much. Yeah. ऐसे टाइम पर लगता है कि और ये फिर से एक रिमाइंडर है कि जब इंसान जिंदा होता है तब हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कहते हैं, हम उसमें 100 गलतियां निकालते हैं, हम हमारे पास बहुत कुछ है क्रिटिसाइज करने के लिए, जज करने के लिए। और जब वो इंसान चला जाता है तब हमें लगता है अरे नहीं, ये कितना अच्छा इंसान था, इसको नहीं जाना चाहिए था। तो ये एक रिमाइंडर है कि जो आपके आसपास लोग हैं उनमें अच्छाइयाँ ढूंढें, उन्हें अप्रिशिएट करें। बुराइयां तो इंसान में है ना। It's very nice to hear from you after a long time, Sri. I hope you're well. वेरी ट्रू। मेरा भी आज भगवान से, ऊपर वाले से यही सवाल है कि सारे अच्छे लोगों को अपने पास क्यों बुला लेते हो? अच्छाई की जरूरत तो यहाँ पर है, अर्थ पर है। यहाँ बुराई इतनी बढ़ गई है और आप सारे अच्छे लोगों को अपने पास बुला रहे हो। नॉट फेयर, गॉड, नॉट फेयर। These days, I'm just thinking, I might not talk to my mom, or I might not talk to my sister, but I'm definitely going to be thinking about Sushant, and I'll be definitely engaging with at least one Sushant Singh warrior. That is my life right now for the past 15, 16 months. It's just how life has changed.
What is that one thing that you remember? Did you watch when he was in Big Boss? Mowgli ji and Lima ji, appreciate your sentiments, but just trying to keep this session a little. So, Wonaji, thank you, ma'am, for joining from Facebook, but we're just going to keep this session only as much as possible positive. So, anybody wants to share what about him that you liked and what about him that you remember so much? That is the point of discussion anyway, right now. Yesterday, I was stunned to see this picture, and I was like, wow, both of them in the same frame and just being their cheerful, usual selves. Just SG writes in Big Boss when Sid's mom comes to meet him and how they both hug each other. That scene is killing me so much. Manisha writes, BB13 was epic only because of Siddharth. Must watch because of him. First time in Big Boss history show was extended for 5 weeks. PM Tanya ji is at the dentist right now. She is unable to join right now, but thank you. I will flash this message if she can read it later on, and she says she'll be happy. Thank you. Thank you, Niruben ji. Both were single parents. Yeah, absolutely. I'm not sure if Siddharth has a sister. That's what I can make out in pictures, but I might be wrong. I don't know. Sushant had his sisters, but did Siddharth have anybody? I'm not sure. Sorry, Shalini got disconnected. Premaji, thank you. Yeah, even I was not aware of Siddharth until last year when he was one of the only celebrities who tweeted that he's happy that CBI. I remember that in I think first week of September or late August or something, he had tweeted that, and it was very exciting moment for us SSRs. That is how I know him because I don't have I don't watch Big Boss, but that's since then I started following him and. ISG, I think the tide is slowly turning, and hopefully we will now, move on to better content and everything. Because obviously, up to after Siddharth's death, there is no real point in even. There a lot of people had boycotted, and we had trended boycott Big Boss and all those things. So Alka ji, absolutely right.
Okay, Carolyn Fernandez G writes, thank you, ma'am. He has two sisters. Okay, okay. So Pema G also confirms that. Okay, okay. So, okay. I thought it was one sister, so he has two. Okay. Yeah, our three campaigns, thanks to this guy, we are running these three campaigns: boycotting celebrity endorsements, boycotting Bollywood, and of course, justice for SSR. PM, I'm so happy that you made your Twitter Spaces debut this morning. In Twitter, we are able to gather about 40 to 60 people at any point of time. It is still very much a novel thing for a lot of us. And slowly we are hoping that we'll gather momentum and keep talking about the important topics of the day. So Tanya ji has been really nice and trying to set up all those things. But we still have to remember that we are only 1% of India's population on Twitter. So YouTube is still like, 98% of the world still opens up the YouTube app every day. So um, yeah, we definitely have to boycott Big Boss forever. Yeah. Oh my God. I did not know this. Manisha ji, thank you. Two sisters married and staying in the same building. Okay. Thank you, Varun. Thank you for being here. I hope you're well. Just want to run through a few of the pictures here. Once again, one of the ones that this is the one. Hold on. This is the one that is just so amazing. This his charisma, his what he stood for, and everything is just so. Okay, he has two sisters. Yeah, it's amazing that he took up the responsibility of because they didn't have a father. He probably put himself in the shoes of his father to take care of his family. That's amazing. Yeah, I think Siddhi that's what somebody was saying, that they might be living in the same. Nimisha ji, yes, same as SSR. He has sisters, yes. Yeah. Boycotted Bollywood and Big Boss after Sushant. Yes, I remember that. We had made a trend because we were just like so awake, so wide awake after losing him. This is one of the most amazing pictures. I keep thinking about this child every single time I see this, and I'm like, look at the loss of the potential that is so hurting us, right? What could he have been? What else could have he have been? That is the loss of potential that we are all grieving here. It feels like that since yesterday, Limaji. That's I agree with you. Shobha ma'am, thank you, Jai Hind.
All of us are hurting around the world. All of us in the Indian diaspora or Indians are just like hurting so badly, just so unfair. If anybody, if nobody is joining, I'll just end conclude with these. After reading these comments, I think Shalini couldn't stay any longer. I think she's hurting. Okay, PM. Okay, so Sonal might have started her own space this morning. Possible, ma'am. Yeah. Muslima ji, thank you. Yes, ma'am. We are all gathered here in one sentiment. Absolutely. This is one of the pictures that will stay with me forever. Yeah, pictures of his mom and Shanaz, just so heartbreaking. Just feel sorry for them. They have to grieve publicly. Just can't even afford the privacy because all these vulture media and paparazzi are probably just like hunting them down. Just feel so sorry. Yeah, absolutely. Alka ji, thank you for being here. Can you please turn on your camera just 1 second and you can, I'll add you to the stream, ma'am. I just have to make sure. Just 1 second for me and then your camera. Can you hear me, Alka ji? Yeah, even I'm not a huge fan of the Big Boss concept, but I think when it started, I think in Britain, I think the whole idea was to the whole idea was to create that shock value, right? Like of loud people just like fighting, bickering, and just creating some kind of drama. Alkaji, I'll just take you on the stream and just please, you can speak. I don't know, your camera is not turning on, but I'll just take you. Yeah, you can speak, ma'am. Hello, hello. Absolutely. Charles, thank you for being back, sweetie. Okay, Alkaji, I think she got disconnected. Oh yeah, oh yeah. This is the promise. This is the promise. That is what we are doing with our action-oriented campaigns, right? So many SSRians just on fire on YouTube and Twitter, just relentlessly fighting for what we believe in. That's amazing. I think, Varun, this is like the golden question, right? So all these people in the druggy wood doing so many things to their body with their body. I mean, just amazing.
Charles, you can unmute yourself and speak, sweetie. I'm just scrolling through the pictures here. Poonamji, your question, we will explore that in another segment. I'll just flash it here so Varun and everybody sees this and we can debate on that. Sushant's body was not allowed to be taken home for final family rituals. Yeah. So at the crematorium itself, they performed all those things, but we'll continue talking about these in our back to basic segments. Shalini, are you okay? Are you able to speak? Want you to gather yourself with all your courage. I know you're a very brave girl. Please. Absolutely, ma'am. We are like 432 of us here. If we can each tell 10 other people, that 10 other people tell that 4,000 people, all of us then tell 10 other people. Just can you imagine the amount of momentum we can gather? So, absolutely. Yeah. Who in Bollywood can really act? Any one of these Nepo kids, just absolutely, they don't stand a chance. Absolutely, Mamtaji. Just, it's literally first time I heard Gutterwood word, I was just like, yeah, ye genius. Hai. Jo bhi, whoever came up with this Gutterwood word is a genius. That's literally what it is. Yeah, please, yes, speak. Thank you, Siddhiji. Yes. Yeah, I mean, so some of us, believe Amit Verma ji and some of them are creating boycott celebrity endorsement campaigns, and they were showcasing how Samsung was doing, their endorsements using Alia Bhatt. And I was like, are you guys kidding me? Like, do you even notice what's happening around you? Are you guys so blind that you are not even like seeing what is happening around you? It's just unbelievable. Hello, Yash. Hope you're all settled in into your home. So, thank you for being here. Rajesh ji. Okay, hold on 1 second. We have Rajesh ji. Oh no, he froze. Hello, Rajesh ji. Are you here? Let me see if I can add him. Can you speak something, sir? Let's see if we can. Oops. Okay, is it just me or everybody is getting disconnected today? Okay. Okay, Rajesh is back. Let's do. Hello, Rajesh. Namaste. How are you? Fine. रत्ना जी गुड इवनिंग। Thank you, sir. How are you? आप कैसे हैं बताइए। आज तो मैं इतना सैड हूँ न्यूज सुबह से देख करके। अब मैं अभी देखा हूँ एबीपी न्यूज मतलब इतना नैरेटिव करता है, इतना मतलब क्या बताया। मैं इतनी गुस्से में हूँ। अभी ऑफिस आया हूँ, जस्ट मैं ऑफिस से आया हूँ। किसी ने सब मेरे को अभी बात बोला ना, मेरे को लगता है ना कि उसको मैं क्या कर दूंगी। इतना गुस्सा मतलब मीडिया वाला जो नैरेटिव फैलाया है ना, अभी भी लोग के दिमाग में वही है।
बॉयकॉट करते हैं, लेकिन जो लोग पहले मीडिया वाला दिखाए तो उसी लोग के दिमाग में लगा कि बॉलीवुड वाला वो भी ऐसा था, हम कि सर आप कैसे इसको ऐसा आप बोल दिए। अब मतलब वो मेरा बहुत निजी है वो जो बोले ऐसा, तो फिर बोलते हैं कि बुरा मत मानिएगा। मैं बुरा मानने की बात क्या, फिर मैं चुप हो गया तो समझ गया कि इनको बुरा लग गया। हमको बुरा, आप उनके बारे में बोलेंगे ना तो आपको भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ भी है आप इतना बड़े पोस्ट पे आर्मी ऑफिसर हैं। मैं बहुत बुरा लगा मेरे को भी, हम कैसा नहीं बोल सकते कभी, बताइए आप, हम लोग इतना दिन से लड़ रहे हैं, आप ऐसा गलत नहीं बोल सकते ना। तो हम लोग बेवकूफ है क्या जो इतना फाइट करे, इतने दिन से कर रहे हैं फाइट, आप ऐसा बात बोल रहे हैं। हाँ ही बोले बोल, लेकिन उसके बारे में गलत मत बोले ना, जो मीडिया बोल रहा है वही बात आप भी बोल रहे हैं। जैसे आज एबीपी न्यूज वाला दिखा रहा था कितना नेगेटिव, हम किसी के बारे में जान नहीं सकते, कुछ बोले ऐसे मत बोलिए। सुशांत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऐसा, मतलब आप नहीं बोल सकते हैं किसी के बारे में, जो नहीं जानते तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको 5 मतलब कितने 14 मंथ हो गए ना, 14 मंथ से जुड़े हुए हैं, इतना सब काम छोड़ करके इतना लगे हुए हैं जस्टिस के लिए, आप ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले तो उनको भी बुरा लग गया, बोलते हैं कि बुरा मत मानिए, बुरा नहीं है, ऐसा बात बोल दे तो मेरे को बुरा लग ही गया। मैं किसी को नहीं छोड़ता, SSR के बारे में कोई भी बोलते ना, अपना घर का माँ बाप क्यों ना हो। नहीं नहीं है ऐसा मत कीजिए। नहीं, सी वो आर्मी ऑफिसर जो है अब वही हो रहा है ना, जो भी मीडिया में परोसा जा रहा है वही बोल रहे हैं बाकी सब लोग की वही सच्चाई है करके, तो अम, नहीं, उसने ऐसा मेरे को बोले ना, बोले कि राजेश जी आप सुशांत के पीछे पड़े हुए। हमने कहा हाँ पड़े सर, आप समझिए ऐसा था, हमको कुछ नहीं था। आपके कैसे मीडिया वाला बात आप बोल रहे हैं, जो मीडिया में बोला वही आप भी बोल रहे हैं। हमको नहीं, आप जानिए, आप लोग इतना बड़े अधिकारी लोग हैं, कुछ नॉलेज नहीं है तो फिर मत बोलिए उसके बारे में। तो मैं चुप हो गया साइलेंट, तो बोलते कि बुरा लग गया का, तो बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे बोल दिया। हम कैसे बोल दिया क्या, हम क्या तो मूड ऑफ कर दिए पहले बोल करके। ये किसी को सुने की सही रचना जी, मतलब कोई अगर बोल देना, कोई भी हो मेरे घर के भी फैमिली हो ना, अगर SSR के बारे में बोल देना, कोई भी हो मेरे घर का, मैं किसी को नहीं छोड़ता। अब मैं सबको अनफॉलो कर दिया जितना फेसबुक पे था, इसीलिए कोई मत देखो, किसी को देखना जरूरी नहीं है। जैसा लोग जब इतना तो सपोर्ट करना चाहिए ना, तो और मेरे को उल्टा बोलता आप लोग इतना लगे हैं कुछ नहीं होगा। पहले निगेटिव कैसे सोच लिए आपने, तो बोला नहीं, कभी आवाज नहीं उठाया SSR भाई के लिए, निगेटिव बोलने आ जाते हैं। नहीं कि वही हो रहा है कि कितने लोगों को हम चेंज कर पा रहे हैं। फिर से वही बात, फिर से वही बात, मतलब रचना देखो यार हम लोग सब सुनिए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इससे हम्म, ये या नहीं नहीं आप बोलिए प्लीज या ये लोग सब पे बॉयकॉट करते हैं बॉलीवुड के, लेकिन वो जो मीडिया वाला पहले बोला था ना, वही लोग के लोग माइंड में सेट हो गया है। बोलते को भी था ऐसे ड्रग, हम की ड्रग, आप इससे कभी सुने क्या, एनसीबी क्या है, आप न्यूज देखते हैं आप लोग, कभी आया क्या उसका नाम सुशांत का, तो फिर कैसे बोल रहे हैं। हमको बात में बोले ना, अभी देखिए हम लोग, तो आप लोग इतना साल में लड़ रहे हैं ऐसा वैसा, देखते हैं आपको, हम हाँ हम तो ये हैं, हम तो लड़ रहे हैं, हम लोग जब से हुआ तब से लड़ रहे हैं। लेकिन आप वो मीडिया वाला बात सुन कैसे फिर कैसे बोल सकते हैं। आज जैसे एबीपी न्यूज वाला दिखाया, उसको तो लगता है कि अभी मैं चलो जाओ उसके ऑफिस में। नहीं ये सब सुन के भी वो आर्मी ऑफिसर या जो भी है वो उनके बच्चों बच्चों को ये सब कुछ दिखाएंगे क्या वो लोग, जो भी ओटीटी में और ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं मूवीज, वो सब कुछ मतलब फिर से इतना सब कुछ देखने के बाद और सुनने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है, पब्लिक कब जागेगी मतलब। पब्लिक जागी है अभी, सबको को मालूम है, मतलब यहाँ पे अभी है ना, ये हर कोई के सबको मालूम है, लेकिन लोग को जो मीडिया वाला है ना, इसमें वही दिमाग में उनका बैठा हुआ है वो सब। वही हम्म। नहीं मैं कल भी अब देख मैं रही थी जानवी कपूर के फोटोज एंड उसका वो यूजलेस भाई का फोटोज एंड ऑल दोस पिक्चर्स एंड पीपल वर लाइक भाग रहे थे उसके पीछे। मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है मतलब कुछ भी हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तुम लोग उसका ऑटोग्राफ ये वो ऐसे दिखा रहे हैं शायद मीडिया की वो अभी भी इतना पॉपुलर है और अरे मीडिया उन पर नो ट्रस्ट, उन मीडिया पे, सीबीआई पे, पुलिस ऑफिसर पे, वो लोग पे कोई नहीं। जो हम लोग का वही हम लोग का सही है, जो हम लोग के माइंड में आएगा वो सही है। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, हार्ट अटैक होता है किसी का तो 3 बार में होता है, पूरी दुनिया जानती है कि हार्ट अटैक आता है, तो दूसरे बार तीसरे बार में भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। उसका फर्स्ट बार में हार्ट अटैक हो गया,
4 घंटे जिम करता था, वो जिम करने का हार्ट अटैक अचानक हो गया। अरे पहले भी मेडिसिन लेता होगा, डॉक्टर से देखो ना, रिपोर्ट मांगो ना, तो उसका ठीक है हार्ट अटैक हो गया, तो उसका पोस्टमार्टम होता है क्या हार्ट अटैक का? ऊपर हॉस्पिटल है, इतने मुंबई महानगर है, मतलब कई हॉस्पिटल नहीं है मतलब ऊपर से ही बड़े बड़े हॉस्पिटल वहां पे, उसमें जा सकता था ना वो। तो सोचने वाली बात है कि उसी में क्यों लेके गया इसका। मेरे डाउट में तो नहीं इंटरेस्ट नहीं है, हार्ट अटैक कुछ नहीं हुआ है इतना जी। बहुत सारा अंदर का राज जब धीरे धीरे मालूम पड़ेगा ना क्या नहीं है, तो क्या जाएगा नहीं हार्ट अटैक कहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, बट आज का सेशन राजेश जी, ऑनेस्टली आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस मेरे भी हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली। एंड नहीं नहीं, कोई पूछ रहा था अर्लियर कि यार ये इन सब के साथ क्यों नहीं होता है, बूढ़े लोग जो है अभी भी जिंदा है, मतलब उनके साथ क्यों नहीं होता है? तो मैं तो चाहता संजय दत्त है, बुढ़ा, बिना शक्ल वाला, सलमान खान, शाहरुख खान, चेहरा लगता है कि उसका हो गया, वो लोग के हार्ट अटैक क्यों नहीं आ रहा भाई? अब इतने जो हैंडसम है, इतने सारे यंग एक्टर है, उन लोग के अटैक आ जा रहा है। ये लोग एकदम पूरे के अमर हो गया है क्या कि सबको मार डालेगा, सब मार के डाल सबको मार डालेगा, अपने बनेगा वो बसा बसा क्या बोलते हैं, कुत्ता बनकर रहेगा। मेरे को गाली भी आ रहा है सब नहीं नहीं लोग। नहीं, अभी 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 एक सेकंड यार, हम लोग जस्ट, आप एक बात बोलिए कि आपको सुशांत के बारे में या सिद्धार्थ के बारे में कुछ अच्छा सा आपका जो मेमोरी है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। उनके बारे जी में जी। तो बहुत है अभी, और उनका बॉलीवुड के नाम भी बारे ले में तो, हाँ, सही, नाम लेना भी आप मेरे बेवकूफी, हम लोग का नाम ही नहीं लेने वालों का एकदम भूल से भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि मैं सुधार शुक्ला जो था ना, बिग बॉस 13 देखते थे जो अपने, वो एक सीरियल था ना उसमें, वो लोग हाँ, हमेशा देख बालिका, उसी सीरियल। बालिका हाँ वधू, हाँ हाँ, पूरे में तो सब घर वाले भी आज सब थे, मतलब बताओ कि इसके हाँ साथ भी हो क्या हो रहा है। हम कि ना आज तुम लोग घर में बैठ कर टीवी खोल के देखना, बोलते कि आज हम लोग अब टीवी देखते नहीं है, उसी समय से अब तो और कोई नहीं देखेगा, जिसको मालूम पड़े तो भी यहाँ देखने नहीं जाएगा। ऐसे मेरे जितने थे सारे कोई टीवी नहीं देखते हैं मेरे यहाँ, जब से हुआ। नहीं अब ऐसे हुआ ना, बिल्कुल। जो भी थोड़ा बहुत लोग देखने जा रहे थे ना, वो भी बंद हो जाएगा, सब सामने आएगा ना। अटैक होता है क्या, यंग अटैक अटैक होता है, वो सारे बूढ़े पड़े हुए उनका अटैक नहीं आता है, वो अमर हो गए हैं क्या? हम लोग कुछ नहीं होता है कभी, फिर नहीं आता होगा। नहीं वही अभी देखिए, हो अभी इतना बॉलीवुड का हुआ है सुशांत के बाद बॉयकॉट बॉलीवुड, तो अभी बॉयकॉट बिग बॉस बोल रहे हैं पब्लिक। तो होगा, टीवी का भी नुकसान होगा, होना चाहिए, बिकॉज ऐसा शालिनी जी बोल रही थी कि वी डोंट टेक केयर ऑफ देम, यहाँ पे जब है तब तक हम लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं, बाद में ऐसा होता है तो वी जस्ट लाइक। अब मुझे एक और भी ठीक, आज मैं एक्टिविटी देखा किरण, वो अपना यूनियन मिनिस्टर का, ठीक है भाई, उनको क्यों पसंद कर रहे हो अक्षय कुमार को? तुम यूनियन मिनिस्टर हो कि तुम लोग के बॉलीवुड के मिनिस्टर हो? मैं तो अब समझ नहीं लगता है, मेरा पावर है तो मैं क्या करूँ। नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे राजेश जी जो अपने हाथों में कानून लेके आने वाले हैं, बट हम हाँ, लोग हम को लोग का इलेक्शन आएगा ना, वो तो पावर है हम लोग का। वो बॉलीवुड थोड़ी बनाते हैं, हम ही लोग वोट देते हैं ना, तो बनते हैं मतलब प्रमोट वो कर भाई। हमारे जवान आर्मी है कितने सारे हैं, कर्नल है, वो लोग नहीं कर सकते हैं क्या? तो तुम ये बोल, कभी सलमान के बुलाओगे, कभी अक्षय कुमार को वही, मतलब बस आलिया भट्ट या सोनाक्षी सिन्हा या यही बस लोग मिले क्या तुम लोगों को, मतलब। अलका जी, आपको फिर से आना है, प्लीज ट्राई कीजिए। आई थिंक उन आपका कुछ ऑडियो का कुछ है प्रॉब्लम, प्लीज यू कैन ट्राई अगेन। या बोलिए राजेश जी, यू कैन कंटिन्यू, एंड शालिनी प्लीज यू कैन आल्सो स्पीक। हेलो। अच्छा नेटवर्क नहीं है, उसमें कॉल आ गया था ना, डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ, नहीं नहीं, कोई आवाज नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Like, that is what I was thinking, Varun, that, just those two people, and they're not here anymore. And
It's just not even believable, yeah. Itne young, all these people, it's just amazing. Yeah, absolutely, Priyadarshini. I agree with you. We should just, let the soul who has departed. We need to like let him die in dignity and just. राजेश जी डिस्कनेक्ट हो गए. Shalini, you there? It's too late for you. We can close this in the next 10 minutes. I'll just run these pictures and comments. Thank you, Alka ji. Purna Shraddhanjali. Thank you. Charlotte Castellino. Like the Sushan said, both were handsome and talented. Hope and pray we will not lose anyone in the future. We will not, Charlotte ji, if we have our eyes and ears open to what is happening in the world right now. Nipunji, welcome, sir. Dharmaji, thank you. Hi, Varun, how are you? Hey, Rachna. Hey. I'm good. Hello, everyone. Even though I kind of wanted to avoid any session, but I thought I'll just come here for a few minutes. It's not been easy somehow. When the news came last night while our session was going on, I think I was still okay. But slowly, I think I went into a different zone, and gradually, I'm feeling. You know, I think we all need to speak. We all need to talk. Otherwise, we all might get into some kind of depression or some kind of sad state, which is definitely not good. So, guys, of course, this has not been a uh, an easy thing for any one of us. But unfortunately, and especially looking at all the channels and media, even though I hate what I'm seeing right now, the way even media is dealing with this, but chalo, I mean, we cannot just complain about everyone. Uh, Looking at how um, the media was latching on to people and pushing, and they were not letting kind of uh, you know even the family or friends mourn those last moments or last minutes. But thanks again to them. At least people who could not be there could witness. But yeah, there are a lot of things, lot of similarities, lot of questions on our minds. But this time, I will only say one thing. Again from my perspective, and this is how I'm kind of explaining it to myself, that this is not the time to create any kind of sensation. This is not the time to start all those uh, stupid narratives and all that stuff. It's quite possible. It there are definitely some questions. We will ask those questions, but it's quite possible. That there is some element of natural death as well, but still we need to ask those questions. Why Cooper? Why
The postmortem happened again in the night time, when there is a very, very strict protocol. Uh, so all these questions have to be asked, no doubt about it, but not right now. I think right now we just need to let, I don't know how many of you watched, you know, Shanaz was literally, I mean, even though she is not like officially, they've not disclosed, even though Shanaz has always said uh, that she's the girlfriend, but no official kind of word out. They just started their like future, their career together now, and um, even though Siddharth did so much work, but I think right after Big Boss, this was like his next phase of his life, his career. He always mentioned that he was always like the very aggressive guy, but at the same time, he was always smiling. Thodi der ka gussa. Um, and I think if I remember correctly, Shanaz also mentioned he's just like a coconut. He looks very hard from outside, but he's like so mellow, so soft, gentle from inside, and he takes care of everyone, which is seen the way it is right now. His sisters, even though married and all, um, they were all in the same kind of building together. So all that also speaks volume of the kind of person he was, a family man, a family, uh, always taking care of his family. Unfortunately, uh, the saddest part was, for the mom. Even though the only glimpse I saw of his mom was, she was standing very strong. Um, Hats off to her and more power to her, and prayers for her as well. Losing husband so early and then raising kids all by herself, and now losing a 40-year-old, just 40-year-old. I don't वरुण, know. Yeah, मैं अभी आपके आने से पहले मैं यही बोल रही थी कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल है कि जिस बच्चे को उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाला, पोसा, बड़ा किया और उसकी एम्बिशंस को पूरे होते हुए देखा, और आज उसी बच्चे को अपने हाथों से अग्नि को अर्पण कर दिया। आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई बोझ होगा किसी माँ के लिए, इससे इससे मुश्किल कोई चीज़ होगी किसी माँ के लिए। तो यस, इट इज़ वेरी, वेरी ट्रेजिक। और बीइंग अ मदर, मैं 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ और यही पूछ रही हूँ बार-बार भगवान से कि क्यों? व्हाई? I know. I think uh, you know the chat we had. वहाँ पर you mentioned something, and I'm gonna just say it here. Uh, I think after we become parents, after we become more, I don't know, responsible कहें या जो भी कहें, especially with kids around us, um, even if they have cough, even if they have fever, even if they have a little injury, it's like pains us. Imagine for her, it's like, you know, the sun's gone, and I don't know. I mean, yeah, it is gonna be very, very tough for sure. मैं देख रहा था जिस तरह से, again, अगर शहनाज जो 2 साल पता नहीं या 3 साल जो भी अभी हुए, उतने में उसका हाल ऐसा था. Imagine the mother who would have never imagined. Okay, I think this was, like I call it, right? This was Siddharth Shukla 2.0, a new phase of life. He was pretty much everywhere, on TV, on ads, on everything, and he was doing so well for himself, for his family. I'm sure the family was like
finally, you know, things were going well for him. And yep, this is really really और वही है, हम लोग बॉयकॉट बॉलीवुड तो कर रहे हैं, but at the same time there are very few people, looking at all his tweets for Sushant, looking at what he was doing, and which again we somehow did not catch, or some of us missed it. But he was there, speaking for Sushant, and happy that CBI came in, happy that, and he was almost like Sushant. अब एक ये तो चलेगा, we will all be comparing everyone and anyone with Sushant, because he's become like the flag bearer. So now Siddharth का दिख रहा था कैसे he was caring for the dogs and animals. उनके लिए भी, he was very 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 caring for people. I just read a news few minutes ago. Even for uh, Pratisha Banerjee, उसके parents के लिए भी, he sent 20,000 rupees during the lockdown period. Imagine the kind of man this was. Imagine the kind of person this was. Pratisha Banerjee को गए हुए कितने साल हो गए, and this guy was still kind of taking care of, um, like, प्रत्युषा बैनर्जी तो सिर्फ एक कलीग थी, एक तरह से कहा जाए. उसके पेरेंट्स के लिए भी he sent 20,000 rupees. We don't know और कितनों का ध्यान रखता होगा और कितनों के लिए क्या क्या करता होगा. So these are the things. जैसे सुशांत के बारे में हमें बाद में पता चला, I'm sure सिद्धार्थ की भी बहुत सारी ऐसी चीजें वापस बाहर आएंगी कि how he was, as an individual, as a human being. और इमेजिन ऐसे लोग जो ये सब कुछ करते हैं बिहाइंड द सीन्स विदाउट एनी हू हल्ला, इन लोगों को जल्दी जाना पड़ता है. और वो लोग, जैसे अभी राजेश जी भी की बात कर रहे थे, बुढ़े और गंजेड़ी और नशेड़ी, ड्रग, अल्कोहल से जिनकी लाइफ सुबह उठते ही अल्कोहल से, जो लिटरली कईयों ने तो मजाक में भी बताया हुआ है कि हम तो ब्रश करते हैं, ऐसे लोग अभी भी बैठे हैं, 50-50, 60-60, 70-70 साल के, और लगे हैं पैसे पे पैसा जोड़ने. और ये था जो एक थोड़ा सा सक्सेस मिला, उसमें भी लोगों का ध्यान, जानवरों का ध्यान रखने वाला. So absolutely, I mean, we can go on and on and on, and it'll kind of pinch us. This particular picture that Rachna is showing, imagine this guy आसिम के साथ इतना फाइट हुआ था, लग रहा था कि बाहर मिलके एक दूसरे को मारेंगे. और लिटरली दिस गाय व्हेन ही वॉकड इन, घर पे और मॉर्चरी में भी, it was like क्रेमेटोरियम में, he was broken. He literally was, उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि he was broken. So very sad कि ऐसा हुआ. Nobody would have imagined. um, even though some of the songs that he did, अभी कुछ recent भी किया था, I had a little glimpse of it, and I'm gonna watch it now, but uh, not the best, but his screen presence was completely different. कल वरुण धवन की बात कर रहे थे. वरुण धवन क्या है, 4 फुट 8 इंच या 10 इंच या पता नहीं 5 फुट 1 इंच का. उसके आगे ये 6 फुट 2 इंच का. इतना No, yeah, no, it doesn't, like we all know, it doesn't matter looks or anything. Just be a good human यार. Being human का शर्ट ही मत पहनो यार. कुछ like असली में कुछ, just be a human and show. It's something just, exactly. No, absolutely. See, it was never about, even though he had the looks, but his screen presence, his just presence, right? I mean, he had that aura around him. चाहे वो Big Boss में हो, चाहे otherwise भी, I still remember I was in school when this Balika Vadhu used to come. और उस time पे, like, my mom and family used to watch it.
there were couple of people, right, who made such a strong impression कि यार, wow, these are like, we really, if we can, we want to be like them. एक तो उनका कैरेक्टर उस टाइम पे ऐसा दिखाया जाता था, so positive, Mm. everything was very nice around them. But then there were very few people who turned out to be like the same in real life. And this guy, this is Sushant ka we got to know after he's gone. Now I'm sure there'll be stories and there'll be things which friends will share. How this person was, and hearing about what he did to Pratyusha's parents. I mean, who would do it? ये इतने बड़े बड़े stars हैं, उनके कितने celebrities. Recently एक news आई थी, this actor who died, I'm forgetting his name. He was promised, a dialysis, thing by Amir Khan. Promise करने के बाद नहीं वो देते. यहाँ क्या था? So, एक सेकंड, आई जस्ट वांट टू एड्रेस अमित जी, आपका सेंटिमेंट समझ में आ रहा है सर, बट एक्चुअली सीबीआई के साथ हमारा बहुत ही, एसएसआर वॉरियर्स का हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस हफ्ते में. सो प्लीज वी आर गोइंग टू शोकेस दिस होपफुली नेक्स्ट वीक. We'll gather all the responses, all the phone calls, all the things, all the phone call experiences that we had. We'll share the emails that we sent, all things, and will lot of people want to talk about their positive experience with the CBI and with the authorities. So please, let's be respectful, sir. We understand your sentiment, but yeah. please. Yeah, I agree. I agree. And also the other thing, कल भी हो रहा था, सेशन के ऊपर शुरू हो रहा था. Everybody is right now jumping onto conclusion के, Siddharth has been killed and he's been murdered. लोगों ने तो फिर वही नाम लेने शुरू कर दिए थे, सलमान खान ने मारा है and all that. Guys, right now there is, let's not even start creating these narratives. I know Sushant ke time pe there were people who maybe had certain evidences, certain political leaders who started taking these names, and then we started picking on those things. But right now, Siddharth Shukla ke case mein, please, my humble request, let's not start this sensational thing that Salman Khan or somebody else has killed him and all that. Not that I'm supporting Salman Khan or anything, but this is how this thing will start, and then पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि व्हाई इज द पेरेंट्स दे आर अगेन थ्रेटन्ड एंड ऑल दैट नॉनसेंस विल स्टार्ट. सारे केसेस सेम नहीं है, सारी चीजें सेम नहीं होती. प्लीज डू नॉट डू दैट. Anybody who does that, please stop them. That's my humble request. I am still gonna debate, whether it's a natural death or not. It seems like it is. We will have to wait for the family. Family ke paas visra hai, they've collected it. I am sure they will be, they've done their due diligence. Mother, this is this is really not the same as Sushant's case or Disha's case or anybody. This is here. The mother is just like Rabia ji. If there would be any kind of doubt, suspicious, or anything, I personally have a gut feeling that she will not keep it to herself. She will, because she's lost everything. She's got nothing else to lose, guys. So please do not promote any kind of fake narratives or any kind of fake stories. Uh, Things will come out. Don't feel that they will not. But please, let's even if somebody has gone or is dying a natural death, let's not defame him, his family. Let's not make sensational, news around it. That's the only thing. Yes, we should just humbly ask the question to the family, why did they not choose, when it's already said, he was already dead at home and his body was taken. Why was the body taken to Cooper versus why was it not taken to any other hospital? That's the only question I think we should ask.
This is like Sunanda's. I don't. Again, Om Shanti ji, मैं फिर वही सबको बोलूंगा. Please, let's not create any kind of thing. Anything is possible. We all know that. What is that medicine? जो news आ रही है कि कोई medicine खाई थी. He woke up. There are 5 or 6 different versions of news coming in. We don't know, so we should not support or promote any kind of fake narrative. We should continue to ask. Let some 1 or 2 news channels reach out to the family in like 15, 20, 30 days. But right now, please give them their space, give them the time to think, to mourn. This is really not good. कि अभी वो कहते हैं ना, एक बड़ा गंदा डायलॉग है और बड़ी गंदी लाइन है, बट आई एम गोना स्टिल से इट कि अभी उसकी you know I don't know if I should be saying it, Oh, but no, forget it. If you don't, yeah, don't. he's still, his blood and flesh is still kind of around in a way. And we should respect this guy. We should respect his family. Don't start this just because somebody wants views or somebody wants news. Instead of that, if you can go to a temple, light a candle or do something, just wish good for the family and give them more strength. Trust me, the mother is definitely very strong. She is very strong. Kuch bhi hoga, she will not sit quiet. She will not sit like anybody else. She will rip apart the entire, I'm very confident she will rip apart the entire world if she feels there is something wrong and she wants justice. So let's not make a mockery of anybody's like death again, and again create sensation around it. Jolly Ghoshalji is here. One second, let me add. Ma'am, can you turn on your video for 1 second? You don't have to be on camera. Just want to see. Okay, thank you. Thank you. You can switch it off. Thank you so much. Okay. Welcome, ma'am. हाँ, गुड इवनिंग सबको. मैं सुन रही थी वरुण जी का. तो मैं भी कल थोड़ा शॉक्ड थी कि ऐसे अचानक किसी का चले जाना, क्योंकि ये जो एसएसआर का केस हुआ है उसी को मतलब सब लोग सोच रहे हैं, मतलब उसी में मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब शक होता है कि एक सिंपल हार्ट अटैक हुआ है तो उसको क्यों पोस्टमार्टम किया जा रहा है. फिर घर के सामने जो हॉस्पिटल था उसमें नहीं ले जाके कूपर में गया, तो कूपर इज वेरी डाउटफुल. मीन्स मतलब सबको एक डर लग गया है कूपर के नाम से. तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि देखो इसको मतलब उसमें डाइवर्ट मत करो, क्योंकि एसएसआर केस में ना बहुत सारे प्रूफ हैं, पर इसमें हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है. हम लोग किसी के बारे में अगर मतलब दोष दे रहे हैं तो हम लोग के पास क्या प्रूफ है. सिंपल उन्होंने एक मेडिसिन लिया, उनको हार्ट अटैक आया, तो उनके फैमिली में भी कुछ बोला नहीं गया है. तो इससे क्या होगा, मूवमेंट मतलब हट ना जाए. मतलब हम लोग एसएसआर के जस्टिस के लिए, दिशा के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, ये मूवमेंट उसी में होना चाहिए. हम लोग मतलब सभी को एक टाइप मतलब देखना नहीं चाहिए. पहले तो हम लोग के पास एविडेंस होना चाहिए. तो मैडम मुझे यही बोलना था. मतलब मैं वरुण जी से एग्री करती हूँ. या नहीं, आपने जो बोला जॉली जी, मैं एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. हालांकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ फिजिशियन, बट मैंने जितना पढ़ा है, क्योंकि मैं किसी जमाने में मेडिकल फील्ड में भी थोड़ा था, तो देयर इज अ वेरी लाइक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट. ये दो अलग चीजें होती हैं, हालांकि रिलेटेड हैं, बट हार्ट अटैक से रिकवर होना या उस पे सरवाइव करना की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं वर्सेस कार्डियक अरेस्ट, जो कि लिटरली कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में बड़ा फेटल होता है. तो दो अलग चीजें हैं. लोग यहाँ पर दोनों को मिक्स कर रहे हैं और मैं हर जगह देख रहा हूँ.
Everybody is saying heart attack से मर गया है, heart attack से he's dead. No, he's not. He's dead because of a cardiac arrest. और कार्डियक अरेस्ट के अंदर वेरी सिंपल टर्म्स में अगर बात करी जाए तो ब्लड पंप होना बंद होता है, एंड दैट्स हाउ. जब ब्लड पंप होना बंद हो गया तो ऑब्वियसली अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव. बट हार्ट अटैक ऑब्वियसली एक छोटा मोटा कोई कोई ब्लॉकेज होता है या कहीं पर कोई पॉज आ जाता है, उससे हार्ट अटैक होता है. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. कार्डियक अरेस्ट में if you are not close or if you're not around people or if you're not immediately taken into hospital या उसके लिए, so वहां पर रिकवर करना या बचना, जैसे कि इसके सिद्धार्थ के केस में हुआ है. It has been a case of cardiac arrest. Imagine early morning या कभी नींद में एकदम से उसका cardiac arrest हुआ और he could not survive. But the questions would be, वो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि there is some medicine that he took, he woke up and he mentioned के मुझे पानी पीना है, वो पता नहीं वो सच है कि नहीं है, वो कहाँ से आई, मुझे अभी I don't have any kind of validation around that. So there are stories coming out about it. All I can say is that right now we should not speculate, period. As that's all I can say. So, यस, please. मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगी वरुण जी. देखिए, सब लोगों को खराब तो लग रहा है. सिद्धार्थ शुक्ला भी कोई ऐसे एज के थे नहीं, तो ये ना क्वेश्चन मन में उठेगा, क्योंकि हम लोगों के पास एक केस जो SSR का केस है, उनको भी ऐसे मार दिया गया, तो सब लोगों को एक बहुत शक हो गया है. अभी कोई सुइसाइड बिलीव नहीं करना चाहता, या ऐसे हार्ट अटैक केस या एक्सीडेंट केस सब लोगों को शक होता है इसमें बॉलीवुड है. तो ये थोड़ा लोगों का, मैं बोलूंगी, इमोशनल फीलिंग्स है इसमें. लोग सोच रहे हैं, पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग इसको इस केस के साथ इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे फैमिली अभी तक कुछ बोल नहीं रही है. अभी कुछ लोग बोल रहे हैं दिशा के केस में फैमिली नहीं आई थी, तो अभी देखिए सभी, मैं भी कल मान रही थी, लोगों के बातों में मैं भी एग्री कर रही थी, बट मुझे एक पॉइंट लगा कि ऑल केसेस सब सेम नहीं होता है. पर और एक मैं बोलूंगी सर, यहाँ पुलिस जो आई है, मेरे एक रिलेटिव का भी ऐसे हार्ट अटैक, वो सोई थी, डिनर करके सो गई, तो सुबह वो उठ नहीं रही थी. पर इस केस में वही लग रहा है, पुलिस क्यों आई, यही क्वेश्चन है. उनका भी तो हार्ट अटैक घर में ही हुआ था, कोई पुलिस पोस्टमार्टम ये सब तो कुछ नहीं हुआ. तो ये सभी शक हो रहा है कि ये सब क्यों हुआ, पुलिस क्यों आई, बॉडी एकदम कूपर से एकदम वहां पे ले गए, घर पे नहीं लाए. तो छोटी छोटी ऐसी बातें हैं. नहीं, वो सेलिब्रिटी का वो जो और एक एंगल होता है ना, अपना हम लोग तो कॉमन मैन है, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी एंड थोड़ा वो मीडिया लोग आ जाएंगे एंड ऑल दैट, तो वो भी हो सकता है जॉली जी. तो करेक्ट एग्जैक्टली. जो रत्ना जी जो कह रही है, राइट. आई मीन आप ये भी सोचे ना, दिस इज अ सेलिब्रिटी, ये कॉमन मैन नहीं है. कॉमन मैन के मैं वैसे जो आपने एग्जांपल दिया उसमें आई एम वेरी सरप्राइज कि ऐसे केस में भी नॉर्मली पुलिस को, क्योंकि देखो कार्डियक अरेस्ट मतलब हॉस्पिटल या डॉक्टर से वैलिडेशन चाहिए होती है. आप नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता कि घर में अगर किसी की कार्डियक से डेथ हुई है तो उसके लिए पहले हॉस्पिटल या डॉक्टर आके कंफर्म करेगा कि हाँ ये कार्डियक से ही डेथ हुई है. सो और जब सेलिब्रिटी की बात आती है, ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज के केस में तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होनी पड़ती ही है, बिकॉज दे हैव टू प्रूव, दे हैव टू मेक श्योर कि कोई और एस्पेक्ट तो नहीं था इस डेथ के अंदर. सो ये कहना कि कि पुलिस क्यों आई, इसमें शक है, उस चीज पे हमें शक नहीं करना चाहिए. बिकॉज एंड ऑफ द डे अभी दिलीप कुमार की डेथ हुई थी कुछ महीनों पहले. वहां पर भी अगर आपने देखा हो बहुत पुलिस थी, उनको एम्बुलेंस और सब जगह पे साथ में पुलिस सिक्योरिटी का था. सेम थिंग हैपेंड विद और भी दो चार ऐसे लोग थे जिनके साथ हुआ.
एंड ऑफ द डे सेलिब्रिटी का कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है कि कहीं कोई और फाउल प्ले तो नहीं है। तो ये कहना कि क्योंकि पुलिस आई, आई एम श्योर द फैमिली वुड हैव आल्सो, अभी बहुत सारे मीडिया में एक दो स्टोरीज जो चल रही हैं, अगर उसके ट्रैक पे चलें तो बिल्कुल सही हुआ है कि पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी था। अगर वो कार से रिलेटेड कुछ चीजें आ रही हैं जो मीडिया में नहीं लाने दे रहे हैं उस चीज को, तो उस उन चीजों को पहले आने दो। अभी तो इट्स लेस देन लाइक 48 आवर्स। इतनी जल्दी किसी भी तरह के नैरेटिव बनाना या स्टोरीज बनाना वो बहुत गलत होगा। इट विल बी डिसरिस्पेक्ट टू बोथ सिद्धार्थ एंड हिज फैमिली। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब टाइम होगा, एब्सोल्युटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इट इज नॉट about anything else. So Siddharth's mother will definitely come out and speak. She is a very vocal person, and she will not shy away. और वो तो single-handedly, I mean, she can take care of it. So please, मेरी सिर्फ उतनी है कि इस time पे we should all just be very mindful, and send positive vibes to the family. More power to the family. This is sad, but let's not make any stories. और Thank you, एक Jolly और, Ji. Thank you. Yeah, या please. थैंक यू नहीं, बस एक और चीज मैं सिर्फ बोलूंगा, एक और चीज जो बहुत ऑड, वो भी मैंने न्यूज में पढ़ी है, विच वाज वेरी स्ट्रेंज, दैट दे सेड कि नॉर्मली सिद्धार्थ डजंट ईट दैट मच आउटसाइड, पर कल या जब वो घर से वापस आए तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज दैट ही सेड ही हैड फूड आउटसाइड। तो वो एक दो चीजें हैं जो बहुत ऑड सुनने को लगती हैं, बट अभी के लिए बात वही है। आई एम श्योर क्या खाया क्या नहीं खाया क्या हुआ, वो सब पोस्टमार्टम के अंदर कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हालांकि वो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पोस्टमार्टम ऊपर में क्यों, दैट इज द ओनली वरीसम थिंग जो जो इज नॉट राइट, which should not have happened. So, सर Jolly Ji, yeah. आपका कोई कंक्लूडिंग कमेंट है? कंक्लूडिंग मैडम, बहुत देखिए, जिनका जाता है वही समझते हैं। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ मैं श्रद्धांजलि देती हूँ, उनकी आत्मा रेस्ट इन पीस। और बहुत खराब लग रहा है कि इतनी जल्दी, मतलब कोई एज भी नहीं था, 40, इट्स नॉट, मतलब बहुत कुछ, मतलब। और वो तो, उनके तो बहुत फॉलोअर्स थे और भी वो कर सकते थे। बस यही कहना है, और लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को अभी जो एसएसआर दिशा का जो मूवमेंट है, जिया का, मतलब उसमें मतलब मोटिवेशन करना चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्ट नहीं होना चाहिए इससे, बिल्कुल। क्योंकि सीबीआई से बहुत अच्छा कल मतलब रिस्पांस मिला है हम लोगों को। सीबीआई भी एग्री कर रही है। एक फोन कॉल में एक जन ने शायद गुवाहाटी ना कहाँ से कॉल किया था, तो वहाँ सीबीआई ने कहा है कि इट्स मर्डर, तो टाइम तो लगेगा। तो सीबीआई एग्री दैट एसएसआर केस इज मर्डर, सो इट्स वेरी पॉजिटिव साइन। थैंक यू मैम। Absolutely. Thank you, ma'am. Thank you so much, Jolly Ji. Appreciate that. थैंक यू। Shalini, do you have any concluding comments? Shalini? I think she's on mute. Okay. Yeah, I'm here. I'm here, Yeah, Rachna. yeah, yeah. Yeah. It's actually a very heavy day, a very heavy night. And the more I see the pictures and the more I hear, oh, it's very difficult, Rachna. Sorry. Yeah, it's okay. It's okay. We have a lot more that we have to do because all these things keep happening. We have to keep doubling down on whatever we are doing. So we need to talk about next week. We are going to talk about how we are boycotting celebrity endorsements, how we are getting responses from CBI. We are not going to stop. We are going to double down on our efforts. We are going to channel all this grief into momentum. So it's okay. It's okay. It's just that, in Sushant's case, we have people to blame. We have
is some place where we can actually take our angst out. लेकिन सिद्धार्थ के केस में वो भी नहीं है ना, किससे शिकायत करेंगे? भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, whoever. That's the only place we can, blame or put our grievances to. सिद्धार्थ के केस में we can't even blame anybody, और हम अपना गुस्सा, अपना grief कहीं और निकाल नहीं सकते. That's the biggest thing. I still can't believe he's gone. I still can't get my, you know, it's still not sunk in. Like, it'll take time. I have still been, मुझे ऐसा लगा था कि after Sushant, I've cried for a year for Sushant. Believe me when I say this. And it was only now that I could come to terms with it, saying, okay, we are fighting for his justice and we'll continue fighting. बहुत बार ऐसा होता था कि मैं सुशांत के बारे में सोचती थी, उसकी फोटोग्राफ देखती थी और फिर आंखों में आंसू आ जाते थे. अब I do not know how will I endure this and how will I deal with this, because I just don't know. All the good guys in this world, भगवान अपने पास बुला लेते हैं. I don't know why. This isn't fair. This is just not fair. It shouldn't have happened. I'm sorry, Rachna, I can't talk. It's okay. It's that's what I was telling earlier. What we are grieving as mothers and as parents and as adults, and I'm exactly his age, and I'm thinking, it's as if I don't exist from tomorrow. Like, what are we grieving here? We are grieving the loss of his potential, right? Like, so much these gentlemen could have done. They have already done so much in their short lives, and the kind of impact that they're creating and everything, and we have to not let their loss go in vain, and that is why we are here. Thank you everybody who has joined. I just want to leave with one thing. If I have learned anything from what I'm seeing around me, this is something that I want to put forward. I'll just remove the banner so that you guys can see. I'll read it out for those of you who are not able to see it. So Hindi में, if you can translate it, Shals, after I read, I'll be really grateful. Since from the very beginning, we talk into believing that success and happiness lie in the future. It is always, since no matter what age we hit, we still want to be successful somewhere in the relative future. But how about trying now for a while, trying something now for a while? So that is the biggest lesson that I have learned from how Sushant lived his life, and just the way he always was focused on doing the best he can at the present moment. So that is what I have learned, and that's what I try to implement in my own life. So, Pramoda, yeah, we'll have a separate session for that place. Yeah, totally understand your sentiments. A lot of people Shalini was saying, a lot of people to blame for all our losses and everything, but we need to propel our grief into action. There's no other choice. Thank you everyone for joining. Thank you, Jolly Ji, Shalini, Varun. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you. Thank you.